I've lost two of my family I'm members, so my sorry. Nani, Yeah. and then just 2 weeks back my Mamu. Right. तो आई थिंक वो भी एक अजीब सा शिफ्ट है लाइफ में कि लाइक माई मॉम वॉज Yeah. ऑलवेज अवे एंड शी वॉज एट वर्क Right. एंड माई फादर ऑलवेज लिव्ड इन न्यू यॉर्क विद हिज फैमिली Right. सो टेक्निकली बोथ माई पेरेंट्स वर माई नानी. Hmm. Nani was at home, and I share a very close knitted bond Yeah. with my Nani. All the learnings that I have, all that I am today, I think it's because of her. तो मैं अपनी फिल्म की शूट कर रही थी 3 साल पहले, और उसका फर्स्ट स्पेल जब हमने शूट कर लिया तो उसके बाद दमस्तम. उनका जी Yeah. दमस्तम तो उनका इंतकाल हो गया. और अभी 2 हफ्ते पहले माय I'm मामू. sorry, so you were close yeah, to her. yeah. She just died. She died 3 years back and Mamu died like 2 And weeks मामू भी back. उसी घर में रहते थे. उसी घर में. अच्छा. तो आई थिंक हम सब जो बच्चे हैं, मेरे 3 कजन्स हैं, मामू के 3 बेटे हैं, वो सब मुझसे छोटे हैं. तो आई वाज द फर्स्ट चाइल्ड एट होम. Wow. तो आई गेस वो जो एक पूरा भरा हुआ घर था, हाँ. वो एकदम 2 आपके पिलर्स जब चले जाएं, Yes. और उसके बाद फिर आपको एकदम काम पे भी आना पड़े. लाइक आफ्टर 3-4 days आई वाज बैक ऑन माय शूट एंड आई हैड टू गेट बैक टू वर्क. तो आई थिंक ये सारी चीज़ें अम्मा से ही सीखी हैं कि लाइफ की डायकॉटमी जैसी भी हो, वट एवर हार्डशिप्स आर देयर कमिंग योर वे, इट्स नॉट गोइंग टू स्टॉप फॉर यू. तो काम जो होता है ना, उसको कहते हैं ना क्रच होता है. It's Yeah, like a crutch. yeah. It saves you. It saves You us, know? yeah, हाँ, जब भी कोई absolutely. बहुत बुरी चीज़ होती है या कोई बहुत ट्रेजेडी होती है फैमिली बिल्कुल. के अंदर, you can either sink or you can Yeah. swim or you can Yeah. sort of, your mind should not go towards the hurt so much. I remember when I was shooting for the Mastam, my Nani passed away, and 2 weeks later I had to perform a dance number. And I was trying to divert myself because I was very close to her, course, and I didn't want to stomach the fact that now she's no longer there in my life. तो मैं लाहौर से भागी और कराची आ गई, और मैं अपने फिल्म के सेट पे थी और शूट कर रही थी. तो मुझे ऐसा लगा कि मैं अच्छा एस्केप कर रही हूँ अपनी मिजरी से, जो कि बाय द वे अच्छी चीज़ नहीं है. नहीं है. आई थिंक इट्स You have इम्पोर्टेंट to, टू वेंट आउट एट grief दैट के टाइम. लिए. या Grief के लिए you have to deal with I don't know, somewhat she always promised me when she was alive, she would always take a promise कि you'll never cry when I leave, क्योंकि मैं तुम्हारा कुछ नहीं लेके जा रही, मैं तुम सबको कुछ ना कुछ खुशियाँ, लर्निंग्स, कुछ ना कुछ दे के जा रही हूँ. तो जब भी मुझे याद करो, मुझे बहुत खुशी में याद करना. तो उनके हॉस्पिटल के डेज में भी हम जो उनकी वीडियो या फोटोज लेते थे, तो शी वुड नॉट लाइक दैट. ये मेमोरी नहीं अपने पास रखना मेरी, Yeah. अच्छी मेमोरीज रखना. People like that. People Yeah. don't want to be, they want, लोग कहते हैं ना कि जाके भी मत देखो, you should remember them the way you remember them. When they're very sick, Absolutely. then they don't obviously look their best. Absolutely. And I understand because Yeah. I've been through the same thing. I lost Yeah. my father and my brother within the span of 10 months, and I Yeah. know what that can do to you. Oof. Like what you were saying, na tasveer aadi ho jati hai. Yeah, and I was like this rock everywhere, Yeah. trying to, Yeah. evade from my own emotions. And I was shooting for my song, and then Corona happened. And all that I was running from, I think by nature, by God, it was a shut up call that, now you stay at your home with shut doors. You can't go anywhere. You can't divert your mind. And I think it was during that time when I was able to vent it out. When I was able to, Yeah. embrace and accept my grief. Yeah. कि ये reality है, ये हो गया है. और then of course, I had a lot of people that I'd open out with, shared, what I was feeling at that Yeah. time. I had very odd, irregular, anxiety attacks during that time, क्योंकि कोरोना में कुछ भी नहीं कर सकते. नहीं, और वो तो और भी लोगों को और डिप्रेस कर दिया था ना. एग्जैक्टली. तो एक डिप्रेशन ऑलरेडी था, ऊपर से ये सब बंद होके बैठ गए, तो वो डिप्रेशन आ गया. सो आई थिंक इट वाज अ वेरी टफ टाइम. वेरी टफ टाइम. लेकिन आई थिंक अच्छी बात टफ टाइम की ये होती है कि मैं जब बहुत थोड़ी सी डिप्रेस्ड होती हूँ जिंदगी में, मेरा लिखने को बहुत दिल करता है. तो मुझे लगता है मैंने जितनी भी चीज़ें थोड़ी बहुत लिखी हैं जो अपने करियर में, वो तब लिखी हैं when I was going through something. Right. So even during COVID times, I remember at the Sham Bhai, the director at he the directed Shamuddin. that. I'm very fond of him. Yeah. I told him, I said, film चल रही थी, वो भी at the Sham Bhai बंद हो गई, and I've lost somebody very close to me. And he gave a very good advice. He said, but you have the superpower of writing. You can always escape. You have time. Don't waste that. Write every day. And it does not matter what you're writing, a short story, a big film. Just write. And you'd be able to,
get great things in this time period of yours, where you're maturing, where there is this explosive volcano in you. You can utilize that in a better way. Right. So I think that helped. Writing for me has always been very therapeutic, actually. Yeah, it is. It's like painting or any kind of creative work. Yeah. Is very therapeutic, and writing, especially writing. Absolutely. वो कहते हैं writing के अंदर जो है ना इंसान का सारा जो, और वो कहते हैं कि you can never be इतने क्रिएटिव आप नहीं हो सकते, जो गम आपको सिखाता है वो आपको खुशी कभी सिखा नहीं सकता. बिल्कुल. और खुशी बहुत कहते हैं थोड़ी होती है, गम ज़्यादा होते हैं. बिल्कुल. I mean hopefully not, लेकिन ये कि इंसान को अपना वो जो सेंसिटिविटी होती है ना उस वक्त इंसान के अंदर, वो फिर निकल के आती है. बिल्कुल. बिकॉज महसूस हो रहा होता है, जो दुख महसूस हो रहा होता है इंसान को. So wow, that's something. Yeah. Okay, पहले question पे मैं I got so much from you, my God. But yeah, I'm so sorry about that. But I also think, like my mother's also helped me raise my children. I'm a single parent, and I completely understand the trials and tribulations. But the good thing also about our society is that we have this unit, which is called the family. Absolutely. You know, which really support system. Yeah. बहुत ज़बरदस्त है पाकिस्तान के अंदर. और रिश्ते. You know, हमारे हर रिश्ते का एक नाम है जो कि बाहर नहीं होता, कि हर बंदा, वो आपकी फादर की साइड से हो, बहन भाई हो, या आपकी मदर के, वो सब अंकल आंटी हैं. वो रिश्ते ही नहीं है. खाला, खालू, पुप्पी, फुप्पा, ताया, हर रिश्ते का एक नाम है. एग्जैक्ट पहचान नहीं है. हाँ, छोटे बड़े का भी नाम है. You know, so it's amazing, you know, कि हम लोगों को रिलेशनशिप्स के बारे में इतना ज़्यादा उस पर एम्फेसिस करते हैं. तो ठीक है. So then you grew